A very good afternoon for this day. This today Friday. I think very few people are there. They are slowly coming in. Now it is 1:30, but you have to maintain timing. I cannot wait for such a long time because we have only 45 minutes in front of us. I have to leave you by 2:15. Then only you can attend the next lecture. That is 2:30. Okay. Now I want to give someone important information. Now all of you look at there on your screen. There is a notebook, test book over there. In the test book, in chapter number 1 as well as in chapter number 2, you can see that this kind of questions everywhere. I hope that you are able to see my cursor moving. Can you tell? Can you tell this kind of question sets are there? Here, three questions are there. Even Age, you can see that questions are there. Okay. In textbook, different inside the textbook you see here. So different area, you can see that there are some questions like that. So your assignment is that whatever questions are given in the textbook in this manner in your textbook, you have to write the notes of this, yeah, answers of this in your notebook. Okay, you know that all of you are having the notebook. Please tell me in the chat box. All of you have the notebook. No need to write the full form. You just write Y bus. Okay. Otherwise, there is a provision for showing yes. आपका उधर पार्टिसिपेंट्स का उधर मोर का उधर किधर भी जाके देखे तो आपको उधर प्रोविजन बटन मिलेगा, yes बटन मिलेगा, so that also you can respond. So all these questions, when we finish the topics, no, you have to write the answers of these questions there in your notebook. समझ में आया ये पॉइंट? ये आपका असाइनमेंट, ओके, ये आपका असाइनमेंट है. ये क्वेश्चंस का आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है. ओके, टॉपिक वाइज हम जब खत्म करेंगे तभी आपको ये असाइनमेंट्स लिखे बैठना है. वन थिंग. सेकंड थिंग इज दैन आई विल गिव यू असाइनमेंट क्वेश्चंस आल्सो, चैप्टर रिलेटेड, चैप्टर का रिलेट करके. सो असाइनमेंट्स क्वेश्चन है वो भी मैं आपको जो नोट्स दे रहे जैसा मैं असाइनमेंट अभी पोस्ट आई मीन शॉर्टली मैं आपको प्रोवाइड करेंगे क्लासरूम में. वो भी आपको आपका टेक्स्ट बुक, सॉरी नोटबुक में आपको आंसर करना पड़ेगा. Okay. So this is all about this particular point. I want to go to the next topic. Before that, I'm going to stop the share, and now I want to show you today's session. Okay, we are going for today's session. Before that, we have to go for a poll also. Okay, poll I will take tomorrow. I'm sorry, after some time. Just come on, tell me where we stopped yesterday. या टेक्स्ट बुक में, आपका टेक्स्ट बुक में किधर किधर दिया है? कैन यू टेल? कैन यू टेल? ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है. ये ग्रीन बॉक्स में कैन यू टेल करके जो लिखा है उसका आंसर आपको आपका नोटबुक में लिखना है. यू हैव ऑल ऑफ यू हैव टू राइट. दैट इज द असाइनमेंट. ओके, एवरी डे, मतलब जब पोर्शन खत्म होता है आपको मालूम है कितना तक कवर हो गया. तो उसके अनुसार जो क्वेश्चंस है उधर वही दिन आपको वो क्वेश्चन का आंसर लिखना है. चैप्टर 1 का भी, चैप्टर 1 का भी एक छोटा सा एरिया है ये. ओके, सो इतना है. दैट मींस दैट इज रिलेटेड टू योर स्टडीज. बस इतना ही. Okay, where we stopped yesterday in the last session, where we stopped, please tell me in the chat box quickly. You tell me that where we stopped. Okay, we stopped there at Plant Kingdom. So Kingdom Plan Day we have finished. Okay, the Kingdom Protista we have completed. First Kingdom Munira we completed, then Kingdom Protista we completed, and then the third Kingdom Plan Day also we completed. Now we go to the fourth. The fourth kingdom is done. That is Kingdom Fungi. Okay. So today the topic is done. Right now in this particular session, our topic is done Kingdom Fungi. Okay. So now when you talk about Kingdom Fungi, so what we can see about Kingdom Fungi, you can see that in Kingdom Fungi, whatever living organisms are there, and all these living organisms, you can see that they are non-green.
They are non-green, मतलब in this particular kingdom, अब इवन एनिमल किंगडम देखेगा तो भी सेम है. सो आपको देख सकता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कौन सा टाइप है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, दे आर हेट्रोट्रॉफिक. So what is the meaning of heterotrophic organism? Please write there in the chat box. Quickly write. What is the meaning of heterotrophic organisms? Heterotrophic organisms depends on other organisms for their food. Exactly. That means in the previous kingdom plan day, we have seen that they are preparing their own food materials from the inorganic substances. But here, when you come, you can see that they are depending on others for their food. That means in this organism, one important character you can notice is that this particular organism showing extracellular digestion. एक्स्ट्रा डाइजेशन मतलब देखिए, अभी आपको मालूम है, ये तो बहुत फेमस है, कॉमन है, आपका घर पे भी होगा शायद, ब्रेड. ये ब्रेड का ऊपर ये फंगस डेवलप होता है. ये फंगस को उनका फूड कहाँ से मिलता है, ये ब्रेड में से मिलता है. सो दैट मीन्स ये ब्रेड को क्या करेंगे, दिस फंगस इज रिलीजिंग सर्टेन सब्सटेंसेस और केमिकल्स, thereby this bread is getting digested, and that digested nutrients are absorbed. That means in this case, you can see that the digestion is taking place outside. So since digestion takes place outside, we say this is extracellular digestion. लेकिन हमारा बॉडी में आएगा तो हमारा डाइजेशन कहाँ होता है, अंदर होता है, it is inside. So, but as far as this heterotrophic organism is concerned, you can see first point to be remembered that it is heterotrophic organism which shows extracellular digestion. Second point about this organism you have to remember is that it is seen everywhere. It is seen everywhere. That means it is cosmopolitan. That means fungi are cosmopolitan, means it is seen there everywhere. You can see it in the air, in the water, in soil, and even in all animals and even plants. आपको मालूम है डैंड्रफ, आप शायद सुना होगा डैंड्रफ के बारे में. सुना है क्या डैंड्रफ के बारे में? Yes. You see, it is there on the human head, hair में, hair के बीच में होता है. What is that? That is also a fungus. So dandruff is also a type of fungus. मतलब मैं कहने का मतलब यही है, everywhere you can see. Okay, it is seen everywhere. And third point you have to remember is that where it lives mostly. You see, in a dry area, mostly it won't live. Normally, the fungus is growing in such a place, the place is so warm and humid. आपको मालूम है डैंड्रफ का इश्यू कभी होता है? So समर सीजन में ज्यादा होता है, जब ह्यूमिडिटी होता है तभी होता है. So जब वार्म होता है, where humid place होता है, where these fungus are growing. Okay, they prefer to grow there in warm and humid places. Some examples are given over there. Bread mold is there, orange rods there, और ऑरेंज का ऊपर कुछ पैचेस आपको देखने को मिलेगा. ब्रेड का ऊपर, अभी ब्रेड का पिक्चर आपको इधर दिखता है, सो पैचेस देखने को मिलेगा. और मशरूम व्हाट वी आर यूजिंग, दैट इज कमिंग अंडर दिस कैटेगरी. टोडस्टूल, दैट इज अनदर कैटेगरी. अभी ये प्लांट्स में देखिए व्हाइट स्पॉट आपको दिखता है. ये सब क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ फंगस है. And this fungus maybe they are saprophyte, even some fungus, especially this white spot what you see over here, that we can say that is a parasitic fungus. Okay, so this is the first point I want to tell. I want to say about the fungus. One, they are heterotrophic and extracellular digestion it shows. Number two, it is cosmopolitan. Number three, it is grown in warm and humid places. And then some examples also I given to you. Now what we are going to see, some points here you are going to see that what importance the fungus is having. फंगस को सारे बहुत इंपॉर्टेंस है. हम एक साइड में देखें तो फंगस हमको हार्म होता है, लेकिन at the same time another side you can see it is useful also. So what point you have to remember over here, some fungus, I mean some fungi, we can see that they are providing or they are the source of antibiotics. Penicillium, that penicillin which is obtained from Penicillium notatum. So this is penicillium. देखिए, ये जो Penicillium notatum, that is a fungus.
ये पेनिसिलियम से हमको मिलता है पेनिसिलिन, दैट इज एन एंटीबायोटिक। मैं कल एक एंटीबायोटिक का नाम बोला था, आपको याद है क्या? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन मतलब डाइजेशन बाहर होकर डाइजेस्टेड मटेरियल को अंदर लेता है। अभी आपको मालूम है रेडीमेड रेडी टू ईट फूड मालूम है ना? रेडी टू ईट फूड क्या है? पूरा रेडी करके जस्ट लेना खाना, ओके, कुकिंग करने की जरूरत नहीं। जैसा इधर क्या एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलेगा तो वो बाहर, अभी मैं ब्रेड का ऊपर जो दिखाया जैसा मोल्ड आई मीन डाइजेस्ट करके absorb करता है, that they are absorbing the digested food from the what you can say from the outer source like a mushroom, I'm sorry, bread and all, okay, that is extracellular digestion. So here मैं अभी क्या बोला, एक एंटीबायोटिक के बारे में बोला, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम इज अ फंगस। कल मैंने आपको एक एंटीबायोटिक के बारे में बोला था, which you are getting from bacteria. You remember that? Students, I want response in the chat box. अगर आप लोग लंच के लिए गया, मैं आपके लिए सुबह से वेट कर रहे हैं। सुबह भी आप लोग आया ही नहीं मेरे पास। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस कॉमन व्हाट यू सेड। कल मैंने एक एंटीबायोटिक का नाम बोला था, ओके, लैक्टोबासिलस के साथ बैक्टीरिया का अनदर यूज बोला था। So we are getting streptomycin from the streptomyces. So similarly, from the fungus also you can get antibiotic, that is from penicillium. Then in fungus, normally the fungi, if you look at, we can say they are all multicellular. They are all multicellular except one fungus. वो fungus का नाम है yeast. Except yeast, all the fungi we can say that they are multicellular. Okay, they are multicellular. And you can see that even this is yeast. देखिए एक ही सेल है इसमें। Fungus is a I'm sorry, yeast is a unicellular one. Yeast is the only unicellular fungus. ये आपको ध्यान में रखना है, MCQ से इवन कुछ भी CET के लिए आप जाएगा तो भी you can expect this question. एक ही फंगस होता है यूनिसेल्युलर, वो कौन सा है? Which one is that? The only unicellular fungus. चलो use chat box quickly please. The only unicellular fungus is that yeast. And then one more is that there are many fungi which are causing diseases there in plants and animals. एक example इधर दिया है, wheat rust causing fungus, that is Puccinia. अभी आप ऐसा नहीं सोचने का एक ही फंगस डिसीज प्रोवाइड कर रहे, नहीं, so many fungus there, fungi, singular fungus, plural है तो fungi. So many different types of fungi there, they are causing various types of diseases among plants and animals. Okay, मैं अभी next slide में जा रहे हैं. I hope that you are writing all these things there in your notes, I mean your notebook. मतलब शॉर्ट फॉर्म में मेन पॉइंट्स लिखेगा तो आपको स्टडी करते टाइम ना इजी हो जाएगा लिखने के लिए। मैं ये पावर पॉइंट उसमें नहीं डालूंगा, क्लासरूम में नहीं डालूंगा, आपको मैं नोट्स नोट्स दे रहे क्लासरूम में, ओके। और मेरा लेक्चर का भी वीडियो मिलता है आपको, ओके। नाउ व्हाट आई वांट टू से, यू सी व्हाट इज आई मीन द फंगस इज मेड अप ऑफ व्हाट? आपको मालूम है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म यू लुक एट, the body of living organism is made up of cells. Similarly, we can see that the fungus is also having a body, and that body is made up of many cells, especially the body over here. We say the fungal body, we can notice that they are mostly filamentous. Filamentous बोलेगा तो cell end to end place किया गया है. Now you just look at the picture over here, you can see that the cells are placed end to end. So this kind of ending arrangement even in mushroom everywhere. That is why we say when we have seen the summary of, जब आप summary देखा 5 kingdom का, मैंने आपको बोला है इधर का cells का loose arrangement है, loosely packed, loosely arranged, क्योंकि they are made up of filaments, they are made up of loosely arranged filaments. But you see that this filamentous structure, if you look at, इसमें थोड़ा छोटा छोटा long slender filament स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखिए
सो स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है। और ये जो स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, ये नारो या स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलता है हाइफे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हाइफे। I hope that you are able to understanding me or you are able to follow me. So what is hyphae? Hyphae means the fungal plant body that is made up of small, fine, long, thread-like structures which are known as hyphae. Now this is the hyphae. अभी एक एक यूनिट्स आप देखेंगे ना, ये एक एक यूनिट को हम बोलता है थ्रेड और हाइफे। लेकिन द व्हाट यू कॉल दिस होल स्ट्रक्चर, अभी ये जो अलग अलग हाइफे से ये पूरा बॉडी ऐसा फॉर्म किया है, ये पूरा बॉडी को बोलता है माइसीलियम। दिस बॉडी इज नोन एज माइसीलियम। समझ में आया? ये दो टेक्निकल टर्म, आपको एक एग्जांपल अभी दे रहे हैं। सो उससे पहले मैं ये बोल रहे हैं, द फंगल बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज हाइफे, एंड द नेटवर्क ऑफ दिस हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। समझ में आया? हाइफे क्या है, माइसीलियम क्या है? You understood what is hyphae and what is mycelium? Yes or no? Quickly write capital Y over there. नहीं तो आप जाके देखिए, आपको मोबाइल में एक प्रोविजन है, मैं बोलता हूँ अभी कहाँ है, मोर में जाके देखना, उधर यस बटन, नो बटन, ये सब मोर में शायद देख, मोर है क्या और पार्टिसिपेंट्स है क्या, और पार्टिसिपेंट्स का उधर नहीं है लगता है। सो उधर किधर भी आपका मोबाइल में वो जो बटन होगा, यस, मेरे को ऐसा लगता है वो उधर है करके। नहीं, आई एम नॉट एबल टू सी दैट नाउ। सो समवेयर इट इज देयर, यस बटन देयर, और जो छोटा छोटा बटन देखने को मिलेगा, तो वो बटन से आपको तुरंत रिस्पॉन्स दे सकता है, क्योंकि इधर है ना, मेरा इधर पार्टिसिपेंट्स का उधर था, लेकिन अभी वो भी नहीं दिखता है, शायद वो बंद करके रखा होगा। मैं वो मैं बाद में देखता हूँ। इन बिटवीन मेरे को एक इंफॉर्मेशन आपको देना है, पार्टिसिपेंट सेक्शन में है। इन बिटवीन मेरे को ये बोलना है, शाहरुख खान क्लास में, अभी शाहरुख खान, शिवांगी पाडवा दो है, राजकुमार गुप्ता, नेहा वर्मा, मिश्रा श्रुति, हर्ष मिश्रा, ये सभी लोगों को मैं बोलता हूँ आपका जीआर नंबर रीनेम करके लिखिए उधर। ओके, मैं साजिया को थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, वो थोड़ा देखने के लिए, उनका जीआर नंबर लिखने के लिए उनको मैसेज देने के लिए, आपको उनका नाम चूज करके चैट सेक्शन से या पार्टिसिपेंट सेक्शन से उनका नाम चूज करो, मैसेज लिखने का प्रोविजन है। सो मैसेज दे दो जीआर नंबर लिखने के लिए, नहीं तो जीआर नंबर वो देगा तो आप सीधा डाल दीजिए उसका जीआर नंबर उधर। ओके, or any student if they're in the participant section without any name, विदाउट एनी जीआर नंबर, मतलब कुछ कल का जैसा कुछ डिवाइस का नंबर, कुछ क्लास का कोड है, कुछ क्लास का मीटिंग आईडी नंबर है, ऐसा कुछ भी डालेगा तो ऐसा वाला लोगों को सीधा वेटिंग रूम में डाल दो, और वेटिंग रूम में डालने के बाद भी वापस एंट्री मारेगा तो सीधा उनको रिमूव कर देना, फिर उनको वापस आज का लेक्चर को अटेंड करने को नहीं होगा। जीआर नंबर पुट करने के लिए आप पार्टिसिपेंट्स का उधर आपका नाम का ऊपर क्लिक कर, नाम आपका नेम जो है उसका ऊपर क्लिक करो, वहां रीनेम करके एक प्रोविजन आएगा, उधर आप आपका जीआर नंबर डाल दीजिए, ओके मार दीजिए, काम खत्म हो गया। ओके, नाउ you can see that the fungal plant body is made up of hyphae, and that network of hyphae is known as mycelium. अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देने को जा रहे हैं। आप इधर चैट बॉक्स में आपका जीआर नंबर मत डालो, आपका चैट बॉक्स में जीआर नंबर डालेगा तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा, अटेंडेंस सिस्टम जनरेटेड वहां से आएगा। ओके, आपका कपड़ा है, सो यू सी योर क्लॉथ इज मेड अप ऑफ व्हाट, कैन यू टेल मी? क्लॉथ इज मेड अप ऑफ व्हाट? Cloth is made up of what? Please tell me. Cotton. Cotton. Otherwise, we can use the word. I understood what you mean. It is made up of thread, right? The cloth is made up of thread. Am I right? The thread is known as hyphae.
अभी आपको इसमें से थ्रेड निकाल सकते हैं, ये कपड़ा से थ्रेड निकाल सकता है। वो एक थ्रेड इज दैट इज इक्वल टू द हाइफा। समझ में आया? फंगे का हाइफा बोलेगा तो क्या है? वो थ्रेड है। अभी वो थ्रेड से आपका कपड़ा बनाया हुआ है, वो कपड़ा को क्या बोलते हैं? विल यू कॉल दिस क्लॉथ अस थ्रेड? विल यू कॉल दिस क्लॉथ, आपका जो क्लॉथ है उसको थ्रेड बुलाएंगे आप? नो। देन व्हाट यू कॉल? यू विल कॉल अस cloth only. So when the thread is used for woven the cloth, you are getting the output. That output is known as the cloth. The same manner, when this hyphae, then they form a network over there. ये आपका क्लोथ का जैसा है, ये क्लोथ का जैसा बोलेगा तो ये माइसीलियम है, इसको बोलता है माइसीलियम. So your cloth is similar to mycelium, and the thread of your cloth, that is similar to the hypha of the fungus. Okay, I hope that now it is understood. Now other thing is that if you look at the hyphae, some hyphae, नीचे का hyphae आप देख लीजिए, all these are hyphae, this is also hypha. If you look at this hypha, you see over here, this hypha, look at, you can count the cells here, cell number 1, nucleus देखिए उधर एक एक black dot आपको देखने को मिलेगा. ये black dot क्या है? Nucleus है. That is nucleus because that is a cell. Now this is one cell, in this one nucleus is there. In this is another cell, in this another nucleus is there. And so like that, so many cells, and that how many cells are there, that many number of nucleus also, nuclei also you can see. And how it happens? Because one cell is having only one nucleus. And how the cells are formed? Because of this partition. देखिए इधर एक partition आपको देखने को मिलता है. And because of this partition, you can see that small compartments are formed. Small cells are formed with one nucleus. And this kind of hypha, we can say septate hypha. You followed me clearly, friends? So ये जो partition है, ये जो दीवार है, ये जो wall है, उसको बोलता है septa. You understood this point? Septate hypha. Septate hypha clear हो गया आपको? Yes. Now another example I can tell you that I think you might have gone to our college. अपना कॉलेज में आप लोग गए क्या कभी भी? अपना कॉलेज में गया है कभी भी? यस. अभी देखिए अपना कॉलेज में जाएगा तो उधर फर्स्ट फ्लोर में जाएगा तो यू सी छोटा छोटा कंपार्टमेंट्स रहता है. यस और नो? हैव यू सीन small classrooms there? Yes. And how these classrooms are formed? Because of the wall. Because of the wall. मतलब एक लॉन्ग जगह है, मतलब एक बड़ा लंबा हॉल था, उसको डिवाइड करके छोटा छोटा कंपार्टमेंट्स बना के रखा. ये कंपार्टमेंट्स कैसे फॉर्म हो गया है? बिकॉज ऑफ द पार्टीशन. Okay, because of the partition, and that partition is called a septa. But now अभी ये सोचिए, अभी मैं पूरा पार्टीशन वहां से निकाल दिया. अभी आपने फर्स्ट फ्लोर में गया, सारे बहुत रूम्स देखा, ऑफिस देखा, आपका प्रिंसिपल का कैबिन देखा या सुपरवाइजर का कैबिन देखा, फीस भरने का जगह देखा, उसका आगे स्टाफ रूम देखा, दूसरा 108 में जाके आप बैठा है, अलग अलग रूम देखा है. देखिए ये सब पार्टीशन की वजह से. लेकिन ये पूरा पार्टीशन उधर से उड़ाया या निकाल दिया. Can you call it as small rooms then? Can you call it as a room then? If you remove the partition, सभी partitions को निकाल दिया तो can you see your rooms over there? No. Then what do you see there? You see a big hall over there. You will see a big hall. अभी देखिए अपना कॉलेज का पार्टीशन पूरा निकाल दे, लेकिन अपना जो प्रिंसिपल्स है, वो सुपरवाइजर है, स्टाफ है, ऑफिस में जो लोग है, सभी लोग अपना अपना जगह पे बैठा है. लेकिन एक कैबिन मतलब ये पार्टीशन पूरा निकाल दिया तो क्या होता है? ये बड़ा हॉल में लोग उधर उधर बैठा है. यस और नो? यस. सो सेम कंडीशन यू कैन सी हियर. अभी इधर सेकंड पिक्चर देखिए. सो इधर देखिए छोटा छोटा पार्टीशन होता है, ये छोटा छोटा रूम्स होता है, बट मैंने पूरा पार्टीशन उधर से उड़ा दिया. अभी इधर देखिए कैसा होता है. Now you see this is one room, one person sitting there, there is another person sitting here. So many people are sitting together, but there is a big hall.
So just like that, in this fungus or in this hypha, you can see that there is no partition, there is no wall. If there is no wall, then you cannot see any cell over there. You cannot see any cell. लेकिन सेल का अंदर का न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है. You see, this is one nucleus, another nucleus, third. So many nuclei you can see there, but there is no cell wall formation there. So the whole thing is looking like one cell, but with many nuclei. And this condition is called as a multinucleated cytoplasm. This is called a multinucleated cytoplasm, and such type of hyphae or hyphae we call as cenocytic hyphae. Such type of hyphae we can say cenocytic hyphae. अभी आपको समझ में आया what is the difference between septate hypha and the cenocytic hypha? समझ में आया? You got the point clearly, friends? Now please write in the chat box big Y. Yes. Now the last point over here I want to say, you see here everywhere आपको सेल वॉल देखने को मिलता है. देखिए इधर सेल वॉल देखा, इधर सेल वॉल नोट किया है. That fungus is having cell wall, but the cell wall of fungus is not made up of cellulose. Then what else? The fungal cell wall is made up of, मैं पहले आपको बताया था fungal cell wall क्या है. It is made up of fungal cell wall is made up of chitin. Okay, Venkatesh, you want this one revision? I mean, explanation again. Okay, I will talk. Okay, so you can see that the fungal cell wall is made up of chitin and polysaccharides. ये ध्यान में रखना. फंगस में सेल वॉल होता है. अभी मैंने आपने फंगस में सेल वॉल देखा, वो फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल वॉल देखा, सॉरी काइटिन देखा. प्लांट्स में सेल वॉल देखा, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज बोला. और प्रोकैरियोट्स में आपने देखा, मोनिरा में आपने देखा सेल वॉल. मोनिरा में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? चलो विल गो फॉर ए पोल नाउ. मैं पोल में जाएंगे. पोल में मैं एक आपको क्वेश्चन डाल देता हूं. ओके, ये क्वेश्चन आंसर कर दीजिए. Please answer it quickly. Two questions are there. Two questions. Please answer fast. Page number 12, 13. Page number 12, 13. Okay, 1 minute time is over now. I will give you a few more seconds for you now. Only two questions are there. Okay, I'm going to count down now. Yeah, one. Now 1 minute 15 seconds over. Now 3, 2, 1, time over. Okay. Now you see on your screen the result. See, now you see that according to 5 kingdom system, 5 kingdom system classification, all unicellular organisms or eukaryotic organisms are included under which kingdom? All cellular eukaryotic organisms are included under which kingdom? अभी 4 kingdoms दिया है, उसमें majority लिखा है kingdom protista. That is the correct answer. Okay. So kingdom protista is the correct answer for the first question. I hope that you understood that. Now, second question is that the cell wall of a plant cell is composed of, okay, if 70% of people says that true cellulose. 70% of people says that it is true cellulose. That is the correct answer. So that is the correct answer. Okay. So chitin अपना इधर applicable नहीं है, ये तो fungus में आ गया है. Okay. So true cellulose, that is the plant cell. अभी मैं ये stop कर रहा हूं, मैं आगे topic में जा रहा हूं.
नाउ वेंकटेश मुझे एक्सप्लेन करने को बोला था, मैं और एक बार फास्ट में एक्सप्लेन करके देता हूँ क्योंकि अपना टाइम ऐसा आगे जाता है, अभी आप लोग बहुत लेट आता है, अभी इसलिए कंटिन्यूएशन को थोड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे को। नाउ व्हाट आई सेड दैट द फंगल प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइन thread like structures, long thread like structures, which are known as hyphae, and that hyphae is equal to our thread of cloth. Then you can see that when there is a network of hyphae, we call that one as mycelium. Then I told you that if you look at the hyphae, there are two types of hyphae. In one hyphae, you can see that there are cells. There are cells end to end like this. And these cells you can see that is because of the septa. And it is called septum or septa. And this at the same time, if this septa is not there, you can see that the hyphae is looking like a long, continuous tube-like structure. Long, continuous tube-like structure, and in that many nuclei are there. And this many nucleated structure, a cenocytic condition. Okay, the many nucleated, yeah, multinucleated condition, multinucleated septa-less condition, a septate condition, we call cenocytic hyphae. In all other hyphae, you can see that partitions are there. So this much I told you about the mycelium of the fungus, yeah, the plant body of the fungus. Now, you can see that the importance of this fungus. Now, if you look at the importance of fungus, you can see that the fungus, now one point is that they are saprophytes. अभी आपने देखा ये फंगस मोस्टली क्या करता है, दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर लिविंग, आई मीन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, मे बी डेड रिमेन्स और मे बी लिविंग वन. So those who are absorbing the nutrients from the dead substances. अभी आपने देखा ब्रेड, ब्रेड के ऊपर कौन सा फंगस रहता है? नॉर्मली हम बोलता है ब्रेड के ऊपर कौन सा फंगस रहता है? ये पेज नंबर आपको 12-13 देखना है, 12-13 टेक्स्ट बुक में 12-13. सो फंगस का, आई मीन ब्रेड का ऊपर जो फंगस होता है वो मोस्टली राइसोपस है या म्यूकर है, राइसोपस और म्यूकर. अभी ये जो ब्रेड से ये जो म्यूकर और राइसोपस को एनर्जी मिलता है या सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स मिलता है, सोल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलता है, ये अब्सॉर्ब करता है. सो सिंस दे आर अब्सॉर्बिंग फ्रॉम द डेड रिमेन्स, अभी ब्रेड इज अ डेड वन, सो उसमें से अब्सॉर्ब करने का मतलब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सो उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने का कारण ये फंगस बोलता है सैप्रोफाइट्स. देन other type of fungus we can notice that some of the fungus we can say they are parasites. अभी मैंने डैंड्रफ बोला, ये parasite है. Okay, so the bread mold or even the rhizopus that we can say that is a saprophyte, but which are living on plants. अभी हमने पहले एक प्लांट में रहने वाला देखा था और दूसरा भी है. Even saprophytes we can notice that when this also means mushroom is also getting nutrients from the dead remains. Okay, dead remains of plants. So you can see that parasites are also there. Parasites are living on other living organisms. Plants में रहता है, animals में रहता है, ऐसा वाला फंगस बोलता है parasites. And some are living in symbiosis or symbiotic. Some are symbionts. अभी saprophytes कुछ लो होता है, कुछ लो parasites होता है. Parasites वाला आपको disease देगा. अभी तीसरा आइटम है symbionts. Symbionts क्या है? They are living in association with the other organisms. For example, there is a type of fungus or there is a type of living organism we call lichens. There is a type of living organism we call lichens. लिचन थोड़ा टाइम के बाद हम लोग उसका डिटेल स्टडी करेंगे, तभी मैं बताऊंगा ये क्या है. लेकिन इतना ध्यान में रखना, लिचन्स, ये लिचन्स में क्या करता है? फंगस एंड algae both are living together. They are living together and they are becoming a body over there. And that means fungus is living in association with the algae. Algae preparing the food and providing to fungus. Fungus is providing shelter to algae. So दोनों living together. And when they live together and sharing their benefits,
we call that is symbiosis. So some fungus we can say they are, some fungi we can say they are symbionts. Then the example मैंने आपको बोला lichen. दूसरा एक टाइप है वो जो देखिए हायर प्लांट्स का जो रूट है, हायर प्लांट्स का रूट को कवर करके स्पॉन्ज का जैसा रहता है. सो दे आर कॉल्ड एज माइकोराइसा. नाउ यू सी, ये जो प्लांट्स में सोइल में जो रूट्स रहता है, रूट्स को कवर करके ये जो फंगस रहता है, ये फंगस रूट्स को पूरा कवर किया गया है. अभी एक स्पॉन्ज लेके आप कुछ कवर करेगा तो कैसा का जैसा कवर करके रखा. सो ये जो फंगस क्या करता है, वो कौन सा रूट में ये कवर किया है, वो रूट को ज्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जो ज्यादा वाटर प्रोवाइड करता है. मैंने बोला स्पॉन्ज का जैसा, स्पॉन्ज पानी अब्सॉर्ब करता है, जैसा ये जो फंगल mycelium, they are absorbing the water and provides that one to the root. So such roots are called as mycorrhizae. So that mycorrhizae is also a symbiont. So मैं आपको ये बोला तीन टाइप बताया है अभी. Are you following me, friends? Three types of fungus because of their associations. One, they are saprophytes. Second, they may be parasites. Third one is that they may be symbionts. Okay. Now, what we have to see, we want to see about the reproduction of fungus. Fungus reproduces mostly all the three methods. Fungus reproducing by all three methods of vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, आपका पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 13 नंबर में है. Okay, the reproduces by means of vegetative reproduction propagation या vegetative multiplication, asexual reproduction and sexual reproduction. अभी ये vegetative बोले तो क्या है? One, fragmentation. फ्रैगमेंटेशन बोलेगा तो क्या होता है, ये फंगस है ना, ये ब्रेक होएगा, ब्रेक हो गया तो एक टुकड़ा ब्रेक हो गया तो दैट कैन डेवलप इनटू अ न्यू वन. सो दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. फिशन दूसरा है फिशन. फिशन बोले तो स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है. ओके. एंड तीसरा है बडिंग. बडिंग आप कहां देखा? ईस्ट में देखा. ईस्ट में से, ईस्ट एक सिंगल सेल्यूलर है, उधर से धीरे धीरे एक छोटा प्रोजेक्शन आता है, ये प्रोजेक्शन धीरे धीरे बड़ा होकर सेपरेट हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बडिंग. So vegetative propagation in fungus by three methods. One is fragmentation. I hope that you are following me. Fragmentation. Number two, fission. And number three, budding. समझ में आया ये तीनों फ्रेंड्स? ये तीनों समझ में आया? आपका टेक्स्ट बुक में ये तीनों दिया है. ओके. फ्रैगमेंटेशन मतलब स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है, एक टुकड़ा टुकड़ा ब्रेक होकर गिर जाता है. और फिशन का क्या है, ब्रेक करेगा तो स्प्लिट करेगा तो फिशन बोलता है. और बडिंग और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आपको आगे देखना है, मैं अभी आगे जा रहा हूं. ओके. नाउ यू सी हाउ asexual reproduction is taking place. Asexual reproduction, we can notice that in fungal mycelium you can see that some mycelia, अभी देखिए ये fungal mycelium है, some of the hyphae they are growing upward. This is the fungal plant body, this is the mycelium. In that individual unit of mycelium is called as hyphae. And this hyphae, one of the hyphae that is coming upward, and that is called aerial hypha. देखो aerial hypha that is coming upward, and then that is becoming a specialized structure that is called conidiospore. That is becoming conidiospore, and this conidiospore producing spore at the tip, and this spore is called as conidia. Okay, so you can see that the asexual reproduction is taking place by means of spore, and that spore is produced on a specialized structure which is called a sporangiospore or conidia or zoospore. So asexual reproduction is by means of conidia or spore or zoospore. Okay, you got this point clearly? So ये point ही आपको ध्यान में रखना, ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं. Okay. Now, when you come to sexual reproduction we can say that also taking place by three different types of spores. Not in one organism, in different types of organism, different types of spores are produced. So sexual reproduction is taking place by means of different types of spore like oospore, ascospore,
and basidiospore. Okay, how many types of spore मैंने बोला आपको? How many types of spore मैंने बोला? 3 types of spore. कौन सा बोला? oospore, ascospore and basidiospore. So asexual reproduction is by means of conidia या spore or zoospore, yeah, any type of spore. Sexual reproduction is by means of oospore, ascospores and basidiospores. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना, ये जो स्पेशलाइज्ड स्पोर लाइक oospore और ascospore और basidiospore, ये डेवलप करने के लिए उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर रहता है. ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को बोलता है फ्रूटिंग बॉडीज. अभी आप मशरूम देखिए, ये मशरूम है, ये मशरूम में ये जो अम्ब्रेला का जैसा जो स्ट्रक्चर दिखता है, ये स्ट्रक्चर क्या है? उनका फ्रूटिंग बॉडी है. ये फ्रूटिंग बॉडी का अंदर इसका स्पोर प्रोड्यूस होता है. समझ में आया? सो in case of sexual reproduction, there are certain specialized fruiting bodies in which the spores will be produced. I hope you understood this point clearly. Okay, now I go to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड, एक्चुअली ये जो स्लाइड है आपको अभी बताने का नहीं है, लेटेस्ट स्टेज में बताना है, लेकिन मैं अभी इधर बात करके जाता हूं. ओके, नाउ व्हेन यू लुक एट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू कैन सी दैट देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होने के लिए 3 इवेंट्स रहता है. ये 3 इवेंट्स को बोलता है, पहला एकदम फर्स्ट इवेंट को बोलता है दैट इज कॉल्ड प्लास्मोगामी. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 डिफरेंट सेल्स वो जो मर्ज हो जाता है. व्हेन 2 डिफरेंट सेल्स आर गेटिंग मर्ज्ड, सबसे पहले क्या मर्ज होता है? उनका प्रोटोप्लाज्म मर्ज होता है. सो व्हेन द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 सेल्स, भाई 2 सेल्स बोलेगा तो इधर मोटाइल सेल्स, मूव होने वाला सेल्स हो सकता है, या नॉन मोटाइल गैमीट्स हो सकता है, कोई भी हो. 2 सेल्स जरूरी है, एक मेल का और एक फीमेल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ये 2 सेल्स जब मर्ज होता है, सबसे पहले क्या मर्ज हो जाएगा बोला? क्या फ्यूज होएगा बोला? सबसे पहले क्या फ्यूज होता है? यूज द चैट बॉक्स. The protoplasm is getting fused, and this fusion of protoplasm is called as plasmogamy. So that is what is called a plasmogamy. Once the plasmogamy, that means plasmogamy is over, protoplasm is fused, then what else will be fused? Both the nuclei will be fused. Both the nuclei will be fused. सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, उसके आगे उनका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा. तो जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, उसको बोलता है कैरियोगामी. गामी मीन्स यूनियन, गामी मीन्स यूनियन और गामी मीन्स फ्यूजन. सो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा और उसके बाद उसका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैरियोगामी. और एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन व्हाट विल बी फॉर्म्ड? ए zygote will be formed. And that when you look at over here, spore देखा इधर, male or female, or plasmogamy occurred, then karyogamy occurred, and because of karyogamy what is formed? Zygote is formed. अभी ये जो zygote है, that is always diploid. ये zygote diploid है. So ये जो diploid zygote वापस it has to become haploid, क्योंकि ये है hyphae, we can say haploid है. So ये डिप्लॉइड साइगोट हैप्लोइड होना चाहिए. ये हैप्लोइड होने के लिए क्या जरूरी है? मियोसिस जरूरी है. दैट इज द थर्ड इवेंट. So in a sexual reproduction, there are 3 main events in the cycle. One is the plasmogamy, that means fusion of 2 protoplasm. Second is the karyogamy, that is the fusion of 2 nuclei. And third is the meiosis, that is the division of the nucleus into haploid one. Okay, that is called a meiosis. Now I want to say this point. This आपका टेक्स्ट बुक में अभी दिया नहीं है, मतलब ये पर्टिकुलर सेशन में दिया है, इसलिए मैं ये पार्ट में स्किप कर रहे हैं क्योंकि योर रिस्पॉन्स इज वेरी पुअर नाउ.
Now, what I want to tell you that, so based on the structure, the mode of spore formation, and the fruiting bodies, fungi are classified. So fungi are classified based on three characteristics. What are the characteristics? Three characteristics. Number one, that is based on their structure, their mycelium, their body structure. Okay. Second is that based on the mode of spore formation. Okay, कौन सा type spore कैसे form होता है, and based on the fruiting body, what kind of fruiting body they have. So based on these three criteria, the kingdom of fungi is divided into subgroups, and these subgroups are called as class. What do you call it as? What do you call? Please tell me. This is called as, the subgroups are called as class, and this class you can say four in number. They are: number one, class Phycomycetes; then number two, class Ascomycetes; then number three, class Basidiomycetes; and number four, class Deuteromycetes. So the kingdom of fungi is divided into four classes. The kingdom of fungi divided into four classes: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. And this division is made based on three basic points: the structure of the thallus, the structure of the mycelium, and mode of spore formation, and the type of fruiting bodies they have. So this is all about the division of the fungus. And now these four classes we want to see there in detail at 4:30. ओके, अभी मैं इधर बंद करता हूं। 4:30 को हमको ये डिटेल में देखना है। डिटेल में आज मैं फंगे और एनिमलिया, ये 5 किंगडम मैं खत्म करूंगा, और उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा। ओके, सो आज खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेकिन वेदर यू आर देयर और नॉट टुडे, आज एक्चुअली आज शाम को 4:30 का लेक्चर बंद करने के लिए मैं आपको बोला सुबह आने के लिए, लेकिन सुबह सिर्फ 12 पीपल आया है। सो सिर्फ 12 पीपल आया, वो लेक्चर मैंने कैंसिल कर दिया। अभी आपको 4:30 का लेक्चर अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि अब अगर आप सुबह आता था ना, 4:30 का लेक्चर में कैंसिल करने वाला था। ओके, नाउ वी विल मीट एट 4:30 with the same link. You join the class. Okay, at 4:15 you please join the same platform. Okay, then we will meet at 4:15 to 4:30 बीच में. Okay, take care, have a nice time now.